Yes, sir. Okay, we are live now. Fine. Okay, so in today's session, अभी तक हमने सैटेलाइट का बेसिक जब थ्योरी पार्ट सीखा, और कल का जो सेशन हुआ था उसमें हमने क्या सीखा? We have learned to design the just outer structure of a satellite. Okay. Now, today what we are going to do? Anybody have any idea what we are going to do today? Sir, Any idea? Yes, sir, Amrit. sir, introduction about satellite system and rocket science No. and drone technology. No, that is the just the workshop name. What is the thing which we are going to do today? So today we are going to do, like yesterday we designed one structure, right? By using which software? Which software we have used? Fusion हमने कल 360. कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया था? फ्यूजन 360. Yes, so जो सॉफ्टवेयर को यूज Sir, करके Autodesk Fusion 360. वेरी गुड. तो कल हमने यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आपको याद होगा. कल हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. आई होप दैट स्क्रीन इज विजिबल टू यू. सभी को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर वी हैव डिजाइन yesterday, right? Guys, if you mute yourself, it will be really good, because if you on your mic, my voice is not audible, it will create so much of disturbance. So please check your mic, means it is off. Ayush, your mic is on. Please guys, it is humble request that please check your mic if it is on. Please mute yourself, right? Okay. Now here, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमने कल डिजाइन किया था. Yes or no guys? Right? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे? आज एनालाइज करेंगे. क्या करेंगे? एनालाइज मतलब मान लीजिए आपने सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर दिया, ठीक है? तो क्या होगा? स्पेस में हमारा प्रेशर लग रहा होता है, राइट? दबाव लग रहा होता है, राइट? कुछ फोर्स लग रहे होते हैं. तो उस फोर्स के कारण, दबाव के कारण हमारे स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आवर सैटेलाइट स्ट्रक्चर if we apply some pressure and force? Clear? Guys, Ayush, your mic is on. Guys, please mute yourself. If you not mute yourself, I'll not go ahead. Please mute yourself. It will create echo. Please check your mic if it is on. Otherwise, nobody can hear and it will create lots of echo. Okay? Yes, good. Please, guys, please do check if your mic is on. If you want to speak anything, you can raise your hand, right? तो कल के सेशन में हमने ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया था. आज हम क्या करेंगे? इसको एनालाइज करेंगे. अब हमें एनालाइज क्यों करना होता है? क्योंकि आपको पता है जब आप स्पेस में जाओगे, और इवन आपके एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है? एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? तो उस प्रेशर के कारण आपके स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फोर्सेस ऑन द स्ट्रक्चर? उसको हम आज एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ मेनी एनालिसिस, बट टुडे स्पेशली वी आर गोइंग टू डू दिस एनालिसिस, एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस. कौन बच्चा यूज कर रहा है स्क्रीन पर? प्लीज डू नॉट डू दैट गाइस, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास. ओके, सो what we are going to do today, we are going to do the static structural analysis. What we are going to do guys? Static structural Analysis. Analyze. I'm going to remove this guy who is doing this on the board. You will not able to join meeting. Please do not do this. You are wasting your time also and our time also and student time also. Okay. Static. Satellite. Ayush. Yes, sir. Why you are doing on the screen this at all? Please do not do that. You are disturbing the class. Okay, static structural analysis. What we'll be doing, guys? Static Structural analysis. अब देखो, एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्यों? हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे, और स्टैटिक मतलब हमारी चीज जो है वो क्या होगी? स्थिर होगी. क्या होगी? स्थिर होगी. और फिर उस पर हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो आज का सेशन हमारा एनालिसिस के ऊपर होने वाला है. वो कौन सा होगा? स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है? ओके, ये हमने कल 4 देखे थे.
आइसोमेट्रिक व्यू और फ्रंट व्यू एंड इवन टॉप व्यू आल्सो, राइट? अच्छा, आज का ये सेशन होने वाला, आपको दिख रहा होगा, पोस्टर दिख रहा है सभी को बच्चों? Yes, sir. Okay, please raise your hand and tell me what you can see on the screen. Please raise your hand and tell me. I will call the name. You can raise your hand. I'll call the name and then you can answer. What you can see on the screen? आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? रेज करिए, हैंड रेज करिए जिसको आंसर करना है. यस पीयू, बोलिए. सर यहाँ पे एक रेसिंग कार, एक सुपर बाइक और एक एरोप्लेन दिख रहा है और एक ट्रक भी. एक ट्रक या दो ट्रक? 2 ट्रक. ओके, गुड. संतोष. We can see the speed when we are going speed, the the temperature pressure, sir. Oh, you are going very high level. I'm asking just basic. What you can see on the picture? Okay, Karan. Yes. आपको क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में? बोलिए. Okay. Navneet. Sir, for that vehicles of the lines, it is there and around it, around them, lines are there. Okay, lines are there. What is that lines? Sir, I think it's air. Air. Okay, good. Good observation. Sujit. सर इसमें पे 2 बाइक दिख रही है, एरोप्लेन हाँ. दिख रहे हैं और 2 ट्रक दिख रहे हैं. Okay. अमृत. Sir, it's force. फोर्स. ओके, कहाँ पे फोर्स कहाँ दिख रहा है? मेरे को तो गाड़ी दिख रही है, हवाई जहाज दिख रहा है, सर ट्रक क्योंकि दिख रहा है. जब वो मूव करेगा तो सर उसमें जो पीछे लाइट दिख रही है तो सर वो एक फोर्स है. ओके, गुड. यस, सैमसंग SM M127G. And 1 aeroplane, 1 formula car, 2 bikes and 2 trucks. गुड. ओके, सभी लोग अपने माइक को ऑफ कर लेना, सभी लोग. ओके, गुड. तो यहाँ पे ये जो है ना, आपको देखिए एक चीज यहाँ पे, एक तो पहली वाली पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? यू आर सीइंग दैट स्पोर्ट्स कार, राइट? Isn't it? Yes, sir. What you call that? Yes, sir. Racing car. What you call that? Racing car. Formula 1 racing car, right? Isn't it? Yes, sir. Second picture you can see it's a like bike. Okay. Third one you can see the aircraft, and fourth one you can see the truck. Guys, your mic is on, please. Okay. Now, अभी पिक्चर तो अलग अलग चीजों की, अलग अलग व्हीकल की है, बट क्या चीज कॉमन है इसमें? सो यू कैन सी, ओके, व्हाट यू कैन सी कॉमन इन दैट? एनीवन? व्हाट इज कॉमन इन दैट? क्या आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में? ट्रक कॉमन है. कहाँ ट्रक कॉमन है भाई? ट्रक तो आपका सिर्फ चौथी पिक्चर में है ना. मैं पूछ रहा हूँ चारों जो पिक्चर है इसमें कॉमन क्या है? अनुआ. यस. Force is C. नॉट लाइक दिस. रेज योर हैंड. रेज योर हैंड. अनुआ. यस. Sir, some lines are. Nine. Okay. Guys, who is speaking? They only have to on their mic. I can see everyone. Most of the mic is getting on and not off. Like, Sir, force. Sujit, your mic is on. Please raise your hand if you want to speak. Yes, Ayush. Sir, force दिख रहा है. कहाँ दिख रहा है? फोर्स दिखाई देता है क्या? नहीं, How सर many force people- कॉमन है. मेरे को तो नहीं दिख रहा है फोर्स. कॉमन है सर. हाँ, कॉमन है सर सब में. क्या कॉमन है? फोर्स. मैं बोल रहा हूँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? यहाँ फोर्स तो हमें नहीं दिख रहा ना. कहाँ फोर्स है? दिखाइए. मेरे को तो हवाई जहाज दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है, फोर्स थोड़ी ना दिख रहा है. तो एनीवन एल्स? यस संतोष. Sir, the force is sir. कहाँ फोर्स है भाई? Lines. यहाँ पे फोर्स. ओके, लाइंस दिख रहा है. चलिए ठीक है, लाइंस कॉमन दिख रहा है. नॉट Sir, इनकी colorfulness. वेरी गुड. हु इज दैट? हु आंसर दिस? पीहू, राइट? यहाँ पे अगर आप Yes, देखेंगे sir. आपको कुछ कॉमन कलर दिखाई दे रहा है. जो आपका ये जो पता है, ये जो आपको लाइंस दिख रही है, क्या है पता है? एयर फ्लो. क्या है बच्चों ये लोग?
Air flow. देखिए जब Air जब flow आपकी is गाड़ी the- मूव करेगी या आप बाइक पर जा रहे हैं मूव कर रहे हैं, तो क्या होता है, अपोजिट एक्शन में आपको हवा तेजी से जाते हुए दिखती है, लगती है आपको शरीर में, राइट? No, तो ये sir. जो है, We can feel air, not see. you cannot see, but the thing is you can feel it, right? So here, Yes, sir. this is what lines is representing airflow. What is representing? Air Air flow. flow. Air flow. देखिए आपकी जो बॉडी है वो क्या हो गई है, आपकी चारों ट्रक, फॉर्मूला 1 कार, बाइक, सारे में एक कॉमन कलर आ रहा है। देखो ये देखिए कौन कौन सा कलर आ रहा है, ये रेड, क्या क्या कलर दिख रहा है बच्चों, रेड, ब्लू, Sir, red, yellow, orange, green. these colors are common in all Red, the yellow, pictures, blue, Yes, green. sir. right? So Yes, sir. that is what I asked, what you can see the common. So these colors are common in the picture. Now here, what do you mean by red color? You see, if you look at the picture of bike, where is the red color? The bike In head. head. Sir, in head. And Sir, in in some of the shoulder part also you can see, right? Some Sir, red in color, right? head. Yes, Right? sir. Red. Yes, sir. Yes, See, sir. if you see the top, if you see the top of the bike, see that at the head and at the shoulder and the back, you can see some red color, right? Yes, sir. Yes, And you sir. can see some of the इधर में places वो blue color. orange और yellow color है. Now tell me, यहाँ red color का मतलब क्या? हेड के ऊपर red color आ रहा है, ऐसा क्यों? The air speed is there more. तो यहाँ पे रेड का मतलब अच्छा, जनरली का रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? What do you mean by red color? Danger. Danger. What do you mean by that? Danger, right? Yes, sir. Red color means danger. So you know when your Yes, sir. bike person is riding the bike, so his which portion will be in more danger? Head. That's why we say wear the helmet. That's why we say wear the helmet. Helmet. Now you see that in the Formula 1 car, which portion is the red color? Can you see the Formula 1 car? Tires. 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 So you Tires. see that if you see the Formula 1 race cars, in that which part is the danger? If there is a Tires. blast happen, most of the time Tires. blast will happen in the tires, right? Tires. Yes, So sir. there is a danger. Okay. Now look at the aircraft. Which reason is the red color? Can you see that? Can you tell me? In the aircraft, हवाई जहाज कहाँ कहाँ? Airplanes. The tail of aircraft and flaps and nose of यहाँ aircraft. पे देखिए आपके जितने भी कॉर्नर है, कॉर्नर दिख रहा है आपको, एंडिंग Yes, पॉइंट, sir. एजेस दिख रहा है आपको? Yes, sir. एजेस में क्या दिख रहा है आपको बच्चों? What you can see in the edges? Yes, Red color. का मतलब आपका हवाई जहाज अगर टूटेगा, if there is a danger for the aircraft, where it will break? From where it will break first? From the Edges. edges. So it means that you have to make your edges strong. That represents that your edges should be what? It should be strong. Now let's come for the truck one. So in truck also the same thing. You cannot see the red color, but when you go very close, you can see that. Okay. Now what do you mean by blue color? sir. Safe. So, Safe. blue color means safe. It's a cool, calm, right? So blue means safe. Blue means safe. Safe. Red means Danger. and what on and remaining all the color yellow, orange, all will come in between of this. In between of what? Blue और red के बीच में आपके सारे कलर आएंगे. समझ में आ रहा है आपको बच्चों? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर वही है यहाँ पे ब्लू कलर जब भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है बच्चों? एनसिस. क्या सॉफ्टवेयर का नाम है? एनसिस. तो एनसिस में हम एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि कौन सा रीजन हमारा स्ट्रांग है. अगर इतनी तेजी से हवा बहेगी उसके ऊपर या प्रेशर लगेगा तो कौन सा रीजन स्ट्रांग होगा, कौन सा रीजन वीक होगा, मतलब डेंजर में होगा. तो अगर हमें वो पता चल जाए तो उससे हमें क्या होगा, अगर हम ये पता कर लें विच रीजन इज गोइंग टू बी इन मोर डेंजर, इट विल हेल्प अस और नॉट? Yes, sir. Help us, Yes, sir. हाउ इट विल हेल्प? कैन एनीबॉडी से? सभी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑफ नहीं है. सब लोग चाहते हैं क्लास को डिस्टर्ब करना, राइट? एवरीबॉडी वांट टू डिस्टर्ब द क्लास. No, sir. You have to raise your hand, guys, otherwise it will create lot of echo. I cannot speak and you cannot also not speak, right? So yes, who want to speak? Tell me why, what will happen if we come to know about this?
This region is danger, this region is not in danger. You can raise your hand who want to answer. Yes, Anuva, you have raised your hand, right? Sir, once can you repeat question, sir? My question is, यहाँ पे हमें क्या पता चला? We are getting that red color region, like in the bike case. At the head, it is in danger. You can see that when bike is moving with very high speed, what will happen? You can see the head portion is the red. Red means this portion is the danger, so we have to keep it safe, right? So how? So will it be? It will be helpful for us, not? हमको ये help करेगा कि नहीं करेगा? Will it help us or not, guys? It will help, sir. It will help us to know that what is strong, what is weak, right? So अगर हमें ये पता चल गया, if we know which is strong, which is weak, what we can do next then? How it will help us? Tell me, guys. Sir, shall I? Yes, tell me, Shanti. Sir, we want to keep something safely to that. So अगर हमें पता चले, if we come to know about this region is weak. So what we can do? We can focus on this, on that region to make that strong, right? Yes or no? हम उस region को क्या करेंगे? Strong बनाने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर बच्चों, जब हम सैटेलाइट में एनालाइज करेंगे, जैसे कि आज हम क्या करने वाले हैं, सैटेलाइट स्ट्रक्चर का एनालिसिस. बच्चों आपको बहुत ही डिस्टर्बेंस आ रहा है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस. आई कैन नॉट स्पीक, आई कैन हियर द इको. So please check your mic if it is on, guys, please. Okay. Now आज हम क्या करेंगे, यही चीज करने वाले हैं. हमने कल जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, सैटेलाइट का आउटर मेन फ्रेम स्ट्रक्चर, we will apply some force onto that structure and we will check it which region will be in more danger, which region will be in less danger and safe. So if we come to know about that, this region is in danger. So what we can do? We can focus on that particular region. हम उस region में ज्यादा से ज्यादा focus कर सकते हैं. Yes or no, guys? Yes, right? Yes, sir. Yes, sir. आप यहाँ पिक्चर्स में देख पा रहे हैं. तो जैसे आपको यहाँ पे कलरफुल पिक्चर्स दिख रहा है, वैसे सैटेलाइट में भी मैं आपको कलरफुल पिक्चर दिखाऊंगा. ठीक है? अच्छा, इस तरह की पिक्चर्स हमने पहले कभी देखी है? इस तरह की पिक्चर्स, ये कलरफुल रेड ग्रीन ऐसा आ रहा है? No, sir. No, sir. Okay, how many of you used to watch news? Sir. आप देखिएगा सैटेलाइट की जो पिक्चर्स आती है ना, whatever the satellite pictures comes, they comes like this only, these colors only, color codings. Like अगर कहीं पे बाढ़ आई है, if you get a like some news, somebody some place having flood or tsunami, they will give like this only. This region having red color means this region is going to be more affected. जब tsunami आता है ना, वो चक्रवात जो घूमते घूमते आता है, right, पानी में, so that will round like this. Which region is going to more affected? They will show with the red color, and they will NDRF team will be there. They will try to rescue the people from that place. Have you heard that in news? Yes, Like sir. whenever... I came, sir. Yes, sir. So like that picture, Yes, on the sir. time the picture will be in this colorful only. Okay, they will show the region which is affected, which is not. So the region which is red, that is more affected, so they will try to take the people out from that place. Is it clear, guys? Yes, sir. I'll show you some more examples. I'll show you some more examples. Can anybody say what you can see on the screen now? Sir, aircraft fan. Please raise your hand, guys. Not like this. Yes, Amrit. Sir, engine of aircraft, engine of airplane. ये क्या है आपका एयरक्राफ्ट का इंजन. सो देखिए आपका ये जो आपको दिख रहा है लाइंस, ये क्या है आपका ब्लू रेड, ये जो जा रहा है, what is that? Sir, Lines. It's a air. So engine is running. So when you know when engine is running, अगर आप लोगों ने हवाई जहाज से यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा जब इंजन स्टार्ट होता है, हवाई जहाज स्टार्ट होता है, कितनी तेज साउंड आता है. That is because of the engine, because it rotates very high speed. So जब when it will rotate with very high speed, what will happen? Air will go inside. So that is what you can see here. Air is going inside. So now you can see where air is cool and where air is hot. Red is hot color, blue is cool. Are you getting? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I will show you another example. So the another example is, what is that? Please raise your hand, guys. Sir. Raise your hand. What is that and what you can see on the picture? Sir, Sir, body of car. sir, what your Anuva, yes. Body of car. Anuva. Sir, body of Guys, car. not like this. Not like this. Raise your hand. Please raise your hand.
Otherwise, it will create echo. Okay. Yes. Raise your hand. Sujit, Sir, body of car. body of car. And what is happening? Body of car. क्या हो रहा है कार के स्ट्रक्चर में यहाँ पर? Yes, Pihu, बोलिए. What you can see on the picture and what is happening? Pihu. सर यहाँ पे हमें कार की बॉडी दिखी है और ये जिसके क्या सारे पार्ट्स अलग हो रखे हैं। अलग हो रखे हैं और क्या दिख रहा है? कार कुछ ऐसे घूम रही है, इस टाइप दिख रहा है आपको? यस What सर, is that? कार मूव हो रही है। मूव हो रही है, इसे मूव करना बोलते हैं. This Yes, is called sir. moving. यस सर, This is called moving. Without wheels, car is moving. Tarzan the Wonder Car. Huh? Yes, sir. Sir, यस shall I सर। tell? Is this a Tarzan car? Huh? It's not moving, guys. Sir, What shall is I tell? happening? You know, Sir, shall I tell? कार का जो स्ट्रक्चर है, जिसे आप क्या बोलते हैं, चेसिस, it has fixed, and we are applying some force onto this. You can see how it is bending. How it is? बेंडिंग। तो हमने फिक्स पकड़ के ऐसे जगड़ ऐसे, we have tightly just catch it, and we are applying some force. So you can see it's bending like this. So you can see which reason is going to be more affected. So can you tell me which reason is more affected, Engine guys? part. Engine part, sir. Front part. Engine reason. And Sir, which reason is safest one? Sir, backside. Then Sir, driver. backside Then I think Driver seat and backside, sir. then passenger and Yes, driver sir. should sit back. Now it is safe part, safe reason, right? Guys, ड्राइवर Yes, को sir. और पैसेंजर को पीछे बैठना चाहिए ना? yes, sir. यस सर। Yes, No, sir. sir. Yes. Then who will drive and who will see the front? Okay, so मैं मजाक कर रहा था, ठीक है? Back side reason is Yes, safe, sir. front reason is danger one. Okay, Danger. Yes, here sir. we are applying. Okay, I will show you one more example here. Okay, can anybody say what is there on the screen now? Bike engine. Sir, bike engine. Sir, bike engine. सर बाइक तो ये आपका क्या है? Sir, stroke bike हो रहा है, दिख रहा है, engine. इंजन है क्या ये आपका? Sir, आपका bike engine. देखिए क्या होता है आपका 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन होता है, ठीक है ना? 4 स्ट्रोक एंड 2 stroke. Two stroke. तो ये आपका इंजन है. जैसे बाइक में आप अगर बाइक का इंजन खोलेंगे ना तो आपको इस तरह के पिस्टन्स मिलेंगे. इसको क्या बोलते हैं आप? जो आपका ऊपर नीचे जा रहा है, पिस्टन्स. क्या बोलते हैं बच्चों? और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्रैंक शैफ्ट है. क्या दिख रहा है? जो रेड कलर हो गया ना, आपको दिख रहा है रेड कलर? Yes, sir. देखिए इंजन जब चालू होता है ये पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे जाता है, तो कौन सा रीजन सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा? कौन सा रीजन? Crank, sir. ये जो आपको रेड कलर का रीजन दिख रहा है ये वाला ज्यादा इफेक्ट होगा. तो हमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है. जब हम इसका मैन्युफैक्चर करते हैं तो वी विल कीप दैट माइंड दिस पार्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. यस सर। No, sir. सर तो आप देख पा रहे हैं जब ये नीचे जाता है तो ग्रीन हो जाता है, ऊपर आ रहा है तो रेड हो रहा है. दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। Okay, next what you can see in this picture? Sir, aircraft engine. Sir, aircraft हर जगह engine. इंजन ही Sir, दिखाई दे रहा है. aircraft engine. यहाँ पे Aircraft not engine, engine. not engine. Sir, that water. तो यहाँ पे इसको एयरक्राफ्ट की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेलर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? Propeller. पंखे को हम प्रोपेलर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Propeller. तो Propeller. just a minute guys. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So ये वाला आपका ट्राई प्रोपेलर है. क्या है बच्चों? Tri-popular. इसमें एक्चुअली क्या है आपके 3 पंखे टाइप में ना? Yes, sir. ट्राई प्रोपेलर. ठीक है. तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है आपको? पंखा घूम रहा है और Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये क्या कर रहा है? हवे को घुमा रहा है. हवे को घुमा रहा है। ये हवे को. अब आपका जो इंजन होता है वो कहाँ लगा होता है बच्चों? इंजन किसके साथ लगा होता है? विंग्स के साथ. Wings जो के साथ. Wings के साथ. जो Wings विंग्स के होता है ना, साथ. एयरक्राफ्ट का जो Wings के विंग्स बाद. होता है उसमें लगा होता है. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विंग्स. दिख रहा है आपको विंग्स? Yes, जिसमें sir. फिट है आपका. Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. देखिए जब आप इंजन लगाएंगे और पंखा घूमेगा तो डेफिनेटली उसके कारण कुछ इफेक्ट होगा विंग पर. तो कहाँ पे आपको दिख रहा है? कहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है? आपको दिख रहा है?
Yes, sir. कहाँ पर हो रहा है बच्चों? एयरक्राफ्ट के विंग के एंड में। विंग का जो क्रॉस सेक्शन है ना, विंग Yes, का जो sir. क्रॉस सेक्शन है वहां पर, ये देखिए Yes, sir. इधर दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन। और इस क्रॉस सेक्शन का नाम है एयरफॉइल। क्या होता है बच्चों? एयरफॉइल। हवाई जहाज का जो विंग होता है उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से होता है। आप साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एयरफॉइल। तो ये देखिए, आपको मैंने कई सारी एप्लीकेशन दिखा दी एनसिस सॉफ्टवेयर की। ये सब आप किसमें करते हैं बच्चों? एनसिस सॉफ्टवेयर। देयर आर लॉट ऑफ मेनी सॉफ्टवेयर बट मेन इज एनसिस 2023 तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन। अब चलिए मेन काम की बात करते हैं। क्या काम की बात? अब हमारे पास हमारा खुद का स्ट्रक्चर है जो हमने कल डिजाइन किया था। वी विल एनालाइज दैट। वी विल एनालाइज। चलिए कैसे एनालाइज कैसे करना है? तो एनालाइज करने से पहले सबसे आपको क्या करना होगा? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो कौन सा सॉफ्टवेयर? एनसिस सॉफ्टवेयर। एनालाइज के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? एनसिस। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, स्टेप नंबर 2 दिख रहा है आपको? यस सर। वहाँ पे www.ansys मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है? ओके सर। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है बच्चों? कुछ नहीं दिख रहा। अब सुनिए, जब आप स्क्रीन उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अभी स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। आप यहाँ पर आ जाएंगे। जब वो लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। आपको देखिए कि यहाँ येलो कलर का कुछ ऑप्शन दिख रहा है नीचे, डाउनलोड एनसिस स्टूडेंट 2023 R1 दिख रहा है आपको? यस सर। ये वाला जहाँ पे देखिए मैंने ऑरेंज कलर से सर्कल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। चलिए क्लिक करते हैं इसके ऊपर। यस सर। ठीक है। तो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका नाम और किस लिए, तो आपको स्टूडेंट डालना है और फिर यह हो जाएगा। चलिए हम करते हैं। ठीक है। यस सर। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगा। आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ कॉर्नर में देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, मैंने इस पे क्लिक किया तो कॉर्नर में क्या दिख रहा है आपको? देखिए, पढ़ पाएंगे? क्या दिख रहा है? डाउनलोड हो रहा है, दिख रहा है आपको? सर नीचे देखिए थोड़ा सा, इट इज डाउनलोडिंग, स्टार्टेड डाउनलोड नाउ। इट्स टेक ऑलमोस्ट 30 minutes, 20 to 30 minutes। A very big software, you know how it is? Almost 12 GB। how much it is? It's a very big software, 11 GB। तो आपके पास जो लैपटॉप है वो काफी हाई कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, देन ओनली इट विल वर्क, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है? यस Yes, sir. Let me stop, otherwise for me it will download 2 times. I have already downloaded. Okay. आप जब डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, once downloaded, तो आपको क्या करना है? आपको वर्क बेंच टाइप करना है। क्या टाइप करना है बच्चों? वर्क बेंच। स्टार्ट बटन। ठीक है। तो आप जैसे वर्क बेंच टाइप करोगे तो आपको ये आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप दैट यू कैन सी द स्क्रीन। यस सर। दिख रहा है यहाँ पे? मेरा सॉफ्टवेयर अभी खुल रहा है। यहाँ पे बच्चों आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, पेशेंस रखना है। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा टाइम लेगा खुलने में, क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज सॉफ्टवेयर, like it takes lot of space in your system। तो देखिए अभी थोड़ी देर में खुलेगा। You can see it's uploading, it's loading, you can see that, can you see that? It's loading here। Yes sir। I've just encircled, if you can see there, it's loading, can you see that? Yes, Yes sir. sir। Yes, sir. Yes, sir. Good। So let's wait for that it's get open। So आपको क्या टाइप करना है बच्चों? स्टार्ट बटन पे वर्कबुक। वर्क बेंच। देखिए हर जगह, मतलब
हर चीज का अपना जगह होता है काम करने का, राइट, इजंट इट? एनसिस में जहाँ पे हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क बेंच। वर्क बेंच। वैसे आपका फ्यूजन में भी था, एक था, राइट, इजंट इट? Yes, sir. तो फ्यूजन में आपने क्या किया Yes, था? sir. डायरेक्ट फ्यूजन टाइप किया था तो आपका आ गया था। बट एनसिस में आपको क्या करना है? जब डाउनलोड हो जाएगा यू हैव टू टाइप वर्क बेंच एंड इट विल गेट ओपन। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, सॉफ्टवेयर खुल चुका है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो guys, if you mute yourself it will take less effort from my side, otherwise I have to shout and I cannot speak like that, so please mute yourself. Guys, can you see the screen now? Yes, sir. Yes, So this sir. is how your Yes, sir. when you open your software it will looks like this. So now here you can see many of the options left side. Can you see that? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे देखिए, Yes, sir. ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। Amrit, can you read that what are the options are there? Like only 2 and 3 options. Amrit. Yes, sir. Once read करिए। So analysis systems. Coupled field Okay. Analysis and coupled field couple model. field harmonic, Yes. couple field model, And coupled field static. And coupled field transient and eigenvalue, buckling and electric, explicit, dynamics, fluid flow, explicit dynamics, ठीक है? fluid flow, और CFX, fluid flow, fluorescent with fluid fluorescent. flow आपको And कहीं पे थर्मल दिख रहा है, थर्मल, स्टैटिक, स्ट्रक्चरल दिख रहा है, देखिए Yes, sir. बच्चों, देखिए स्टैटिक स्ट्रक्चरल कहीं पे दिख रहा है आपको? स्टैटिक स्ट्रक्चरल Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर ये रहा। मैंने I have just encircled with blue. Can you see that? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. And what about thermal? Can you see that thermal and thermal something? See, below one all are thermal. Can you see there here? Many are thermal, यस सर। Yes, sir. right? Yes, sir. And what is the Thermal, yeah. last one? You see the last one, turbo masonry fluid flow. Turbo masonry. Can you see that? Last one. Structures. You know what is turbo machinery? Like aircraft engine. Aircraft. Yes, sir. डेंजर। Engine. एयरक्राफ्ट इंजन में जो भी आपके पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना? यस सर। टरबाइन होता है, कंप्रेशर होता है, इंजन के जो भी पार्ट्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? दैट ऑल कम्स अंडर टर्बो मशीनरी। इसमें आते हैं टर्बो मशीनरी। अभी आपने देखा, आई हैव शोन यू वन एग्जांपल वेयर व्हाट इज हैपनिंग, दैट propeller is fan is rotating and air is going back side, so that analysis comes under this turbo machinery fluid flow. किसके अंदर में आता है? टर्बो मशीनरी fluid flow। यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके एनालिसिस, यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन योर थिंग, व्हाट यू वांट यू कैन डू। यू कैन सी द लाइक फील्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक मींस आपने देखा होगा पेंडुलम। पेंडुलम में क्या होता है? व्हाट पेंडुलम डू? इट रिपीट्स द मोशन। So harmonic, that comes under harmonic. So if you want to do that kind of things analysis, you can do in the harmonic part. You can see the fluid flow. Fluid flow means आपने देखा ना, how when the bike rider is biking, how the air flow pattern is, when aircraft is going, how the air pattern is, when the truck is moving, when the Formula 1 car is moving, how the air pattern of the air is. So that all comes under fluid flow. Under what it comes? अब देखिए, जैसे हवाई जहाज मान लीजिए आपका जा रहा है, ठीक है ना, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो उसके ऊपर हवा बह रही होगी। यस सर नो? When aircraft is flying at 30 kilometer height, the wind will be blowing over to the aircraft, right? Yes or no? Yes, sir. Or some like suppose if you are talking about rocket, so rocket also air will blow over to the structure of the rocket. So means उस air के कारण कहाँ पे कितना इफेक्ट हो रहा है, what is the pressure acting on it. तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे गए, वहां पे जाके वो क्या मशीन मापने लेकर के बैठ गए हवाई जहाज के ऊपर, और यू विल मेजर, will you shift over to the aircraft engine and measure this much temperature, this much pressure, like how doctor do with the help of thermometer? He measure your temperature when you have fever. Will you do like that? When you want to measure temperature, you will go and sit over to the engine and measure and tell the temperature. Will you do like that? यस सर। Yes, sir.
आपको अगर Yes, मैं sir. मैंने पूछा हवाई जहाज के इंजन जब वो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे है तो हवाई जहाज के इंजन में क्या टेम्परेचर है, कहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, कहाँ पे कम टेम्परेचर है, तो आप कैसे पता करेंगे? विल यू गो नियर टू द इंजन एंड सिट ओवर टू द इंजन एंड टेल मी दैट? You will take the thermometer and measure it and tell me? Will you do like that? No, sir. Yes, sir. Will not do like that. If you do like that, what will happen? First thing, No, 10 sir. kilometer height you are going, 10 kilometer. You will not come outside the aircraft itself. Will you come outside the aircraft? No. No, sir. Passenger, your air hostess and crew member, they will not allow until it will No, not take sir. land, right? So then if I say go and measure the pressure, how will measure? You cannot do that. Because if you come out of the aircraft at 10 kilometer, your body parts will not be there. Your only skeleton and maybe bones also will melt. That much high speed will be. So now the question comes, how you will measure the temperature at 10 kilometer height when the aircraft is moving like 800 kilometer per hour? You know हवाई जहाज की स्पीड कितनी होती है पता है आपको बच्चों? Approximate, anyone? सर 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। एक घंटे में कितनी दूरी जाता है हवाई जहाज? 740 800 kilometers, sir. ओके, सो स्पीड बहुत ज्यादा है। इस स्पीड में पता है आपका, 800. देखिए ट्रेन में क्या होता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन गाइस? 70 to 80. सर 160 किलोमीटर पर आवर It will be like, see, if you're talking a train goes almost 80 to 120 kilometer per hour. 82, Or if 200. you are talking about bullet train, like semi bullet, your like bullet will be almost 180 or maybe it will be 200 kilometer per hour or it may be more. 180 So to now see, and what about aircraft? 800, I am saying approximate 800 किलोमीटर। देखिए कितनी तेज है। देखिए अब जब बाइक के ऊपर बैठे होते हैं, जब बाइक वाला आगे वाला बहुत तेजी से भगाता है, when you are sitting backside on the bike and the person is riding with very high speed, like maximum how much bike it will go? We can go like we have to go maximum 60 to 80 in the bike also. 100. In that speed, if you are moving with the bike, the person who is sitting backside, what he will feel? What he will feel? Air is He will doing move with that speed. much. Air will come with very high speed and you feel the tears will start to come out from your ear, right? Eye, right? Yes or no? Yes, sir. Have you Yes, feel sir. that? Yes, sir. Yes, sir. जो आप क्या Yes, बोलते हैं, sir. आंखों से Sir. आंसू आने लगते हैं जब आप बहुत तेजी Yes, से sir. बाइक में बैठे होते हो, बाइक तेजी से चल रही होती है। Yes or no? Yes, sir. Yes, Now sir. think it, that speed Yes, sir. only Yes, sir. आपके tears only are coming out when you are moving with in aircraft and keeping your body outside, hand outside. What will happen to your hand? You know, it will cut off. That hand will, you don't know where it has gone. If you keep your hand outside of the aircraft, the temperature will be very high. You know, it will cut off and it will melt. You know, it will happen like that's why aircraft windows are closed. You cannot open the window of the aircraft. Are you getting? So it's very high, so temperature will be very high. So in that case, you cannot go outside the aircraft and measure it. Okay, or suppose when some car is getting launched, you know, so they will do the collision of the car artificially. So they will make, they will do that in software. If real they cannot do, real what will happen? They have lost, they will lose the money, no? So they will do in the software. So with the help of software, what will happen, guys? They don't have any money loss and they can get the result. So they generally use this software only to analyze. Which software? ANSYS, to do all these things. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, अगर मान sir. लीजिए, Yes, sir. पता है जब आपकी कार Yes, लॉन्च sir. होती, कोई भी कार लॉन्च, तो वो Yes, लोग sir. पता है बहुत सारे टेस्ट करते हैं, कार को दीवार से टकराते, they will do the test of, they will collide the car, new car onto the wall and check it, how much it will be effect. In case suppose car has 80. fallen from some height, how much part will be broken, which part will be more like affected. That kind of test they do. So will they do real test that one? No, they will design that car in the software like a Fusion 360 and they will transfer that design onto the ANSYS and then they do analyze. So like that, what will happen? You don't have any money loss and you don't have any structure loss, right? Yes or no? And you can get the sir. result. Yes, Yes, sir. sir. Because अगर आप दो, Yes, sir. if you collide two cars, you require a what? One person to drive that car. So can you do that? One person is riding and you are doing the collision test. टकराने का टेस्ट कर रहे हैं, कर पाएंगे क्या ऐसा? Will you do that? 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 Will you do that?
No, sir. No, sir. Cars are there and you are going to do the collision test. So both car has to see this testings happen when the car launched. Okay, two cars, they will come in very high speed and they will collide. So what will happen? Will any passenger will be inside the car on that time? No, sir. If passenger will be there, what? He will die. So these No, all sir. they will keep some like what putla जिसे आप बोलते हैं. They will keep inside and they will do the testing. So that all happen with the help of software and basically ANSYS software. Yes, Your sir. automobile industry, your aircraft industry, most of the industry use this software, ANSYS software. ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक का भी है आपको. You can do the electrical analysis also. थर्मल में टेम्परेचर रिलेटेड. ठीक है? वाइब्रेशन भी है यहाँ पे. आपको अगर वाइब्रेशन से रिलेटेड करना है, वाइब्रेशन दिख रहा है आपको? Yes, Random sir. vibration. मैंने देखिए यहाँ सर्कल Yes, किया हुआ है. sir. So you Yes, can do sir. so many Yes, sir. analysis here. You can do so Yes, many sir. analysis here. But what we are going to do today? We are going for what? Static structural. So is this part is clear? Anybody have any doubt till so far? Then we'll start our Sir? analysis. Yes, बोलिए. No, Sir, what is meant by static structural? Static structural means static means it will be in rest, means it will not be moving. We will fix it. Okay, is it clear? Fix. Structural means structure. So we are whatever the structure we have, we'll make it fixed and then we'll do the whatever we want. Okay, structural analysis, we'll do the structural analysis, means we'll do the structure analysis. Is it clear? We'll fix the body, we'll fix the structure. It is not when we apply Yes, some sir. force and pressure, it will be tightly fixed. It cannot move anywhere. Like how the nut bolt will be there, na, screw and all will fix like that. And then we'll apply some pressure and force and we'll check how the body is deformed. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Shall sir. we go next? sir. Any doubt? Anybody have? Anybody have any doubt? No, Shall we sir. go next? Okay. So we are going. So what we are going to do? Static structural analysis of satellite outer frame structure. तो आपको स्टैटिक स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा? आपने सॉफ्टवेयर खोला, यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ. ये मैंने देखिए सर्कल किया हुआ है, दिख रहा है आपको सभी को स्क्रीन पर? Yes, sir. Everybody can see that? Yes, sir. So you have to Yes, click onto that. Yes, So sir. I am going to click on that. Okay, I'm going to click onto that. Let's see what will happen. So I have clicked on the static structural part. So tell me what you can see. When you see any change, let me know. I have clicked, it will take some time. Can you see any change? Guys, after clicking on that, Yes, sir. Sir. what is the change? You can see Yes, one sir. pop-up button has opened. Dialog box has opened. New dialog. इसके बहुत सारे ऑप्शन आ चुके Yes, sir. Dialogue तो box. यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है. देखिए ऊपर लिखा हुआ है स्टैटिक स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल के नीचे क्या है? इंजीनियरिंग डेटा. डाटा आपका ज्योमेट्री, Geometry, collision, model. अच्छा. तो यहाँ पे जो ऊपर सबसे लिखा है स्टैटिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब हम स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहे हैं. स्टैटिक स्ट्रक्चर के नीचे क्या है बच्चों? इंजीनियरिंग डेटा. इंजीनियरिंग डाटा. तो डेटा में क्या आता है आपका बच्चों? मीन्स आपका जो भी मटेरियल आप कर रहे हो वो किस मटेरियल से बनना है, वो सारा डेटा हम इसके अंदर डालते हैं. जैसे हमारा क्या लिया था हमने कल, what we have selected for that our material for the structure, it was aluminium, right? So you can change the data from it, like data in the sense like what is the Young's modulus, what is stress, what is strain. We are not going to deep. Like you can change the material from here. Okay, like what material you want, you can change the property of it. So as it is already tick, we don't have to touch that. Can you see the tick option in front of that engineering data? It is tick option, right? Yes, sir. Isn't it? So it is. So guys, it is default. You don't have to do anything. It is default. So whenever you do any analysis, it will be default. If you want to do change, you can do. So we are not going to do any change. It is default. Like whatever our structure, we are going to take as it is. हम लोग जैसा किया था वैसे ही लेंगे. तो हमें इसमें कुछ change नहीं करना है. Okay. What about next option? What is the difference between engineering data and other data? What difference you can see? So anyone have observed what difference you can see? Anyone?
See, engineering data and alag mein jo other options which are coming below the engineering data, what are the things you can see difference? Anyone? What is the difference? Sir, आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सर इसमें इंजीनियरिंग डाटा पर राइट लगा सकते के लगा राइट का सो बाकी में सब क्वेश्चन मार्क हैं. Very good, very good. So see, when I open, the moment I click on the static structure, ये खुल के आया आपका, and you can see the tick is coming before itself, right at the beginning itself, right? So I said it is default. It is. इसमें tick आएगा ही आपका. तो आप इसमें कुछ change करना. But बाकी में you are getting question mark. You are getting question mark. What do you mean by that? It means that you have to complete these steps. These are the steps. So what is the first step? You have to complete the geometry. You have to complete the geometry. That is what? geometry. So after the geometry, what you have to do? You have to complete the model. So when you complete the model, this question mark will convert into tick. It will convert into Model. tick. So the same like the setup, solution, and then last, what is that? Last is the result. Last is the result. How you, so guys, how you know your step is completed? How you will be knowing that your step completed? The question mark will complete into green tick. Okay. तो अभी देखिए हमें सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं. तो पहला स्टेप क्या है बच्चों? चलिए कंप्लीट करते हैं. पहला स्टेप क्या है? Geometry. ज्योमेट्री मतलब अब हमें यहाँ पे ज्योमेट्री को ट्रांसफर करना है. मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है. पहला स्टेप क्या है हमारा? तो हम क्या करेंगे? ज्योमेट्री ट्रांसफर करने के लिए ज्योमेट्री के पास में जाएंगे, वहां पे राइट क्लिक करेंगे. क्या करेंगे बच्चों? राइट क्लिक. मैंने राइट क्लिक. So just a minute, guys. So right click किया. So what you can see some options are coming. It's got open some other screen. Just give me a minute, guys. Another screen is getting open. So guys, you have to be patient. See at the down. Can you see the down at the bottom right side? I have just in circle. Can you see the circle one? Bottom side. The right one bottom. Yes, sir. नीचे में सबसे मैंने एक सर्कल किया ब्लू कलर. क्या लिखा हुआ है वहां पे बच्चों? शो. ये देखिए अभी ये रन कर रहा है. तो आपको वो नहीं करना है. नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं करना है. वेट करना है. This is a software. It will take some time because this is a heavy software. So something is in progress. So you have to wait. Is it clear? तो आपको जब ये 100% हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका न्यू स्क्रीन खुल जाएगा. ठीक है? So you have to wait. You should have the patience. Many of you don't have patience, right? How many of you don't have patience? And how many of you have patience? Actually, I clicked on some other option. Taking time. Okay, what I'll do? Not good. Let me close that and again open. It's getting open. So यहाँ पे we will complete the geometry, then we'll complete the model, setup, solution, result. So in geometry, what we do, whatever we design in the previous software will transfer here. So when you transfer, geometry will transfer. So geometry step will complete. In the model step, what we'll do? See, when we talk about pressure, temperature and all the properties, pressure जो temperature होता है, इनको मतलब कि जब ये लगेगा तो हर एक पॉइंट पर हमें चाहिए, हर एक पॉइंट पर चाहिए. आपको मैं पूछी इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है. ठीक है? तो आप वो उसके लिए आप क्या करेंगे? मॉडल एनालिसिस करेंगे. उसमें क्या होता है? छोटे छोटे ग्रिड्स जनरेट हो जाते हैं. क्या जनरेट हो जाते हैं बच्चों? ग्रिड्स. तो वो ग्रिड्स हमें जनरेट करना होता है. ठीक है? यहाँ एक let me close this. I'm closing. I'm going to on like again open this software because it's taking time. Okay, I will just share the screen again. I will open this again. So model में क्या करते हैं बच्चों हम लोग? In model, we just divide our geometry in small parts. What we do in model, we divide our geometry, our whatever we have, into the small parts. ठीक है?
or every small part wherever we want temperature, pressure, then we can find out. So that is called meshing. What is called that? Meshing. 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 Small parts में divide करना. So like dividing geometry, like dividing geometry. It has opened now. I'll write. So you can see the screen, right, guys? Yes, sir. It is up. Yes, So sir. dividing geometry into small parts, small आयुष, आप बहुत डिस्टर्ब करते हो, आपका नाम आपको बार बार स्क्रीन में डिस्टर्ब कर रहे हो. प्लीज डोंट डू दैट. Dividing geometry into small parts is called meshing. What is called? Meshing. Meshing with model. Meshing. Meshing we do in model part. Which part? Model part. Model part. जो हमारा सेकंड स्टेप है ना, मॉडल वाला, ज्योमेट्री के बाद उसमें हम क्या करते हैं? मैशिंग करते हैं. क्या करते हैं? And why we have to do meshing? Meshing, generally we do the meshing to divide into small parts, our geometry into small parts. Clear बच्चों? ओके. Yes, तो sir. चलिए मैं फिर से स्टैटिक स्ट्रक्चर क्लिक करता हूँ. ठीक है, स्टैटिक स्ट्रक्चरल. मैंने स्टैटिक स्ट्रक्चरल के ऊपर क्लिक किया. The moment I click on static structural, this open. Engineering data you can see. Again I open, it is tick, so you don't have to touch engineering data. Go to the geometry, then right click. Can you see that right click I have done? Not. You can see what are the options you can do. No, sir. Right click. Can you tell me what are the options you can see? Anyone can read that? Can anyone? Question mark. New What are the options you can see? Yes, Ram. engineering data, geometry, model set. अच्छा. नहीं, ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया है माउस से, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. आप New space claim geometry, new discovery geometry, यस अमृत बोलिए. new design model geometry, import geometry, duplicate, transfer data for new, transfer data, update, components, refresh, So listen, now properly, listen. Okay, fine. Like this, if you read, see two persons are reading. How I can understand? You have to raise your hand. It creates problem for me also, for you also. Okay, now listen. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं. न्यू स्पेस क्लेम ज्योमेट्री फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन इज न्यू डिस्कवरी ज्योमेट्री. थर्ड ऑप्शन, व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन? पीहू. new design model, modular geometry. तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ. So I clicked on the third option, new model design geometry. So you have to wait now. You can see it is show progress. Can you see that at the bottom? It's showing show progress. So you have to wait. You have to wait. Yes, sir. Wait. So just wait for some time. Okay, until it is getting open. Let's talk about. So once you done the model, right, then meshing, you will come to the setup. Setup means you will apply the conditions. Means you are going to fix. Can you see the screen, guys? New screen has opened. Yes, sir. Okay, let me share the new screen. So after you click on the new design modular geometry, you can see this screen will open. Can you see that, guys? Yes, sir. Yes, sir. So which is now which step we are doing, guys? Which is the step we are doing? Which step? How many steps we have? We have total 4 or 5. First one is what? Geometry. Second one is model. So now what? Which step we are doing? Geometry. First step. So geometry step when we do, this screen will open after clicking right. Now you have to go to one option. It's called file. Can you see the file option, guys? Where is the file option?
the top corner, left top corner, left side में ऊपर सबसे Yes, corner में. sir. Yes, sir. Now I will click on the file. Sir. So when you click on the file, there is an option is called import external geometry file. दिख रहा है आपको? Yes, sir. Blue color. Yes, sir. तो मतलब कि import external क्यों? हमने जो कल फाइल बनाई थी वो हम ANSYS सॉफ्टवेयर में, अभी हम क्या ANSYS सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं? We are designing our structure in ANSYS software or not? No. Yes, sir. We are designing in ANSYS software. We are designing our structure in ANSYS software. No, sir. No, Yes. sir. And why you are saying yes? Right there. We have already designed. हमने already design कर लिया है. उसको किसमें किया था हमने डिजाइन? The Fusion 360. Fusion 360. हमने ANSYS में नहीं किया. ANSYS आप ANSYS में भी कर सकते हो, बट ANSYS में आपने नहीं किया था. आपने किसमें किया है? फ्यूजन में. Fusion तो आपको वो फाइल बाहर से मंगवानी पड़ेगी. तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है? इंपोर्ट एक्सटर्नल ज्योमेट्री फाइल. समझ में आ रहा है आपको बच्चों? तो आई विल क्लिक नाउ इंपोर्ट एक्सटर्नल ज्योमेट्री फाइल. तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे 3 फाइल्स दिखाई दे रही है. आपको एक फाइल दिख रही है यहाँ पे, देखिए एक बॉक्स खुल के आया है, अगर आप देख पा रहे होंगे. Yes. Yes. पहली कौन सी फाइल आ रही दिख रही है आपको? सैटेलाइट WD7IGES दिख रहा है. W7. And what about the second one? WSS1IGES दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. कौन सी वाली फाइल थी बच्चों? कल किस नाम से मैंने सेव किया था फाइल को? Satellite WD7IGES. Yes. ओके, दोनों एक ही फाइल है, कोई भी सेलेक्ट कर लेते. ठीक है, चलिए मैं पहली वाली कर लेता हूँ. अब हमें क्या करना है? इसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है. ओपन के क्लिक करने के बाद आप साइड में देखिए कुछ हुआ है यहाँ पे. साइड में कुछ ट्री टाइप आपको यहाँ देखिए. अब जो भी चीज करेंगे स्टेप बाय स्टेप ना, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा. लेफ्ट साइड में जो चीज दिख रही है आपको ना, दिख रहा है बच्चों लेफ्ट साइड में? एक्स वाई प्लेन, सी एक्स प्लेन, वाई जी प्लेन. एंड देखिए सब में टिक मार्क दिख रहा है, बट एक में आपको टिक मार्क नहीं दिख रहा है. तो इसका मतलब वो स्टेप में कुछ करना है आपको. Whenever you don't see the check option, it means that step you have to complete. So which step I have to complete? Can you tell me by looking at? Which step is incomplete? Import. Import के आप आगे आपका कैसा सिंबल आ रहा है? कुछ इस तरह का सिंबल आ रहा है, राइट? येलो टाइप में. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका कुछ इस तरह से बूस्टर साइन, जैसे बूस्टर होता है ना, राइट? Yes, sir. बूस्टर की तरह, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे देखिए ऊपर मेन्यू में देखिए, यहाँ पर आपको देखिए रेड कलर से मैंने सर्कल किया, कुछ दिख रहा है? ये दोनों आपका मिलता जुलता है, नहीं मिलता जुलता? आगे वही साइन है सेम. तो दोनों मिलते जुलते हैं कि नहीं मिलते जुलते बच्चों? मिलते जुलते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. So whenever you get like this yellow color symbol in your this whatever the given left side, so what is the thing is you have to click on the generate. You have to click on the generate. Click on the generate. आपको कहीं पे आपको सेव दिखाई दे रहा है क्या? जो हमने कल बनाया था यहाँ पर दिखाई दे रहा है? No, sir. So now you can see that the moment you click on the generate, your save will come out. Now I am going to click on the generate. तो मैंने क्लिक कर दिया है. You have to wait for some time. Can you see the save now? Yes, sir. Yes, sir. Shape आ चुका है आपका. Shape has imported which you have designed. Can you see that, guys? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जैसा आपने फ्यूजन 360 में, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आपने फ्यूजन 360 में देखा था ना, रोटेट करने वाला ऑप्शन, इधर से उधर ले जाने वाला ऑप्शन, इसमें भी है आपके. कहाँ पर है ये ऑप्शन? सारे ऑप्शंस वही से आपको दिख रहा है बच्चों? मैंने यहाँ रेड कलर से किया हुआ है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Can you see that? Yes. So can you tell me what is the first option? Just observe and tell me. It is for rotating. Rotate. It is for Rotate. what about the second option? Rotate. It is pan. Moving. It is for Moving. then what is the option? You can see Zoom one in. lens is there and Zoom in and zoom out. small icon inside the lens. Something is like this. What is that? It is for zoom. What? Zoom. Zoom in and Zoom in and zoom out. Zoom in and- Now there is another option. Like there is a lens. There is a lens.
and it is written as a plus. What is the meaning of that? To make your like zoom out, you can say zoom out. There is a separate option. Okay. Then what is that? Okay, these options are more than enough to and now there is some more very important options I'll tell you. तो ये पता चल गया आपको कहाँ से आपको ये बड़ा छोटा करना है और रोटेट करना है. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we have some more option here. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सर्कल किया हुआ है. These options also important. Like मैं season 360 में I was selecting the surface, right? Isn't it? So these options are there for selecting option. Here you cannot directly click on the surface and select. Sometime it will not happen, sometime it will happen. So these options will be always there. So what is the first option? First option is for selecting what? Can you tell me, guys? Sides. Corner. Sides. It is called vertex. Corners. Vertices. What is the second option? Second option for selecting side. What about third option? Yes, Just look at it sir. and tell me. For selecting सर इससे हम टॉप व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं. Top, sir. face select करने के लिए. For And what about the last one? selecting all. To select entire body. To select entire body. तो ऑप्शन क्लियर है बच्चों? Full body. चलिए इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Today's session is going to somewhat quite large. So I think it will take another 15 to 20 minutes to finish it, okay? Because now it will not take much more time. Main part is over. There are 18 Explanation minutes part. left. Okay, now. So अब देखिए, let's look at the import option right side, left side. जो आपका वो जो इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इस साइड में आपका रहा है ना? क्या बोलते हैं? Tree diagram. Tree diagram. अब देखिए जो import option था आपका, import option वहां पे देखिए कैसा ऑप्शन आ रहा है आपका. Import के आगे क्या आ रहा है? टिक आ रहा है, मतलब कि आपका कंप्लीट हो गया है. Import मतलब ज्योमेट्री आ गई है. Yes sir, no? ज्योमेट्री आ गई है नहीं आ गई बच्चों? अब क्या करिए इसको क्लोज कर दीजिए. अब इसको क्लोज कर दीजिए. You have to close this screen. So you have to go to the corner and close it. So मैंने क्लोज कर दिया. I have closed the screen now because this is step complete. Now check it, guys. What happened to the geometry? Just look at the geometry and just opening sharing the screen. In front of geometry, what happened? Can you see that? What happened to in front of geometry? Yes, sir. Tick option. Always completed. So geometry step. Completed. Now what is the next step? What is the next step? Model. In model, Now we have to complete the step model. in model, what we do? Meshing. Like dividing geometry Dividing geometry into small parts. Dividing into small parts. Parts. Is it clear? Yes, sir. Who is that laughing like a Ramana? Who is that? Who is that, sir? Okay, fine. So shall we go for the next step, guys? I think how many of you are feeling bored? How many of you are feeling bored? What sir is teaching very boring? No, sir. It is Raise your hand. very interesting. Okay, guys. So shall we go for the next step? Yes, sir. Yes, sir. What is the next step? Yes, sir. And again, next step is calling you. You can see what is the symbol. It's coming in front of model. Come here. It's calling. Model step is calling you. Right? The symbol has changed. Yes, sir. Instead of question mark, something else. Okay, let's click on the model. So double click on the model and wait for some time. Can you see the show progress at the bottom? So you don't have to do. It's not opening. You'll take your laptop and throw. Why it's not opening? Don't do that. Okay? You should have patience. Okay? Because many of you don't have the patience. Why it's not happening? You will punch and that's it. होगा वही करेगा ये सब काम. Who having patience, they only can do. Right. I think you have the patience.
Okay, good. So नीचे आपका देखिए show progress दिखा रहा है. You can see that, right? Show progress, guys. Down, Yes, sir. bottom. Where you will check show progress? At the bottom right corner. Okay. Now new screen has opened. Can you see that, guys? No, you cannot see. No, sir. Okay. No, sir. After clicking on the model, this screen will come. Screen will be like this. Just let me share. Not getting, so what happened? Just a minute, guys. मेरा खाना बचा है ना, भूख लगी है. Who is that disturbing the class? See, if you are not interested, you can leave the class. Okay, if you are not, please don't disturb. Who are interested, let them learn, right? So now, can you see this, guys? Your geometry has come and screen has opened. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now, Yes, just go to the tree diagram region. Which region? Tree diagram. Tree diagram. So now see that where is the problem? Which step is not completed? Just check the tick option. Mesh. Where it is? Or mesh. Mesh. And that is what I was talking about, meshing. So here you can see the power booster option, yellow color. So again, where you have to click when you see like this. So when you go in meshing, you don't have generate option. You will be having something is called solve. You will be having something is called Solve. solve. Can you see the? Can you see here? Yes, sir. Okay. Yes, So you sir. have to click on the. You have to click on the solve. Now I'm going to click on the solve. Just check it. What is the change you can see? I'm going to click on the solve. Solve. See, somebody is playing again. Huh? Just a minute, guys. Sir, Okay. So solve means what you do? Who is doing this? Not Sorry? interested, you can leave. Guys, please leave that. If you are not interested, please don't disturb at least now. If you are not interested, you are not showing interest, and others also you are disturbing. I don't know who is that. Next class you'll not able to attend if you do like this. Okay. So now see what you have to do, guys. Click on the mesh and right click. What are the options you can see, guys? When I do right click on the mesh. Sir, What are the insert, options? update, Update, generate mesh, preview, show, create patch. So what do you do? Generate mesh. I told you now. When you see yellow color, you can click on the solve or generate. So generate. Yes, I sir. click on the generate. Now you have to move. I click on the generate. Check this. What is the change are happening? There is some change will happen. Okay, it's completed. Now can you see the change, guys? Sir, Yes, sir. What are the change you can see? Look at your geometry. What happened? What happened to your geometry? Can you see the change? सर पूरे डायग्राम पे ट्रायंगल बन गए बहुत सारे. ट्रायंगल बन गए, कहीं पे स्क्वायर बन गया. तो ये क्या हो गया? आपका छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया. आपकी पूरी जो बॉडी है क्या हो गई? डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स. Many small parts. ओके. और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपका येलो कलर का सिंबल आ रहा था मेश के आगे, क्या आ रहा है अभी? व्हाट यू आर गेटिंग नाउ? Right. Sir, mesh is means completed. mesh is completed. Very good. Now mesh is completed. Next step is, can you see the option is called static structural? yes, Can you see that? आपको दिखाई दे रहा है स्टैटिक स्ट्रक्चरल बच्चों? Yes, sir. कहाँ पर है? Where it is? सर कहीं पर नहीं है. नीचे. मेश के नीचे, मेश के नीचे, मेश के नीचे दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो अभी क्या करना है आपको? मेश कंप्लीट होने के बाद स्टैटिक स्ट्रक्चरल के ऊपर जाना है और वहां पे क्या करना है? राइट क्लिक करना है. क्या करना है बच्चों? राइट क्लिक करोगे तो वहां पे आपका एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट. इंसर्ट में जाना है. इंसर्ट में जाने के बाद आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं. अमृत, कैन यू रीड व्हाट आर द ऑप्शंस यू कैन सी इनसाइड द इंसर्ट? Yes.
acceleration and standard earth gravity, rotational velocity, rotational acceleration, pressure. Insert a pressure load that तो applies a यहाँ पे constant देखिए आपको फिजिक्स के कैन सी हेयर सो मेनी फिजिक्स पैरामीटर्स राइट एक्सीलरेशन pressure movement force pressure temperature all you can see right yes or no these are the things you study in science right अब यहाँ पे हमें क्या करना है हम लोग का कौन सा एनालिसिस था बच्चों स्टैटिक स्ट्रक्चरल तो स्टैटिक स्ट्रक्चर में क्या होगा हमारा एक फिक्स होगा क्या होगा हमारा something will be fixed and we will be applying some force. So first we'll select option called fixed support. Can you see that there is an option called fixed support? I have to click on that. Can you see that fixed support? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you see that everyone? Yes, sir. So I am clicking on the fixed support. तो मैंने क्लिक किया तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है नीचे नीचे देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया है यहाँ पे दिख रहा है बच्चों आपको Yes, sir. Yes, sir. और फिक्स सपोर्ट जो ट्री डायग्राम में जो फिक्स सपोर्ट आ रहा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क आ रहा है ये स्टेप आपको कंप्लीट करना है अब क्या कंप्लीट करना है नीचे देखिए कुछ खुल के आया है उसमें एक ऑप्शन है अप्लाई क्या है ऑप्शन apply. यहाँ पे बच्चों क्या करना है ये जो फिक्स सपोर्ट है इसको अप्लाई करना है ज्योमेट्री पे तो यहाँ पे कौन कैन यू टेल मी which part will be the fixed for this geometry which part will be fixed कौन सा वाला पार्ट फिक्स होगा इस शेप में which part we should make it fixed so it will not move कौन सा पार्ट हमें फिक्स करना पड़ेगा guys anyone Top view. no top क्यों करेंगे नीचे वाला फिक्स करेंगे हम कौन सा फिक्स करेंगे बच्चों सर बैक व्यू Back view. जब आप इसको रखेंगे जब आप अपने सैटेलाइट स्ट्रक्चर को रखेंगे तो नीचे से फिक्स रहेगा ना राइट that's your choice which part you want to that's your choice which part you want to fix but we'll fix the bottom part so what we have to select we have to select the bottom surface now how you select the bottom surface guys how you select surface so in this there is an option is called something can you see that at the top I have encircle how to select surface how to select entire body you have to select from here so you have to select third option you have to click over there because you're not able to select otherwise you will not able to select so you have to select the bottom surface you have to select the which surface Bottom surface. can you see that I have selected bottom surface it has become green color can you see that Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now what you have to do you have to click on the apply option we have to click on the apply option Apply option. where is the apply option can you see the apply option guys Yes, sir. now click on the apply option when I click the apply option just tell me what happened I'm clicking on the apply option what happened can you tell me That's converted into blue color. ये ब्लू कलर में चेंज हो गया तो नीचे वाला नीचे देखिए ब्लू कलर का एक एरो आ रहा है इसका मतलब क्या है नीचे वाला ये वाला सरफेस क्या हो गया फिक्स है ठीक है चलिए हमने फिक्स कर दिया मतलब कि अब ये क्या हो गया हमारा स्टैटिक हो गया बच्चों लोग ये बहुत ही गलत बात है आपका माइक ऑन है आपको जब बोलना है तब माइक ऑन करना है राइट मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है and others are getting echo if you are keep on your mic on right so please make sure your mic is off Arjun your mic is on please mute yourself अब देखिए हमने क्या किया we have applied the fix means what it has become static अब structural analysis में इसमें कुछ force लग रहा होगा some force will be acting maybe some pressure will be acting so what we'll do again we'll go to the static structural and we'll right click we'll go to the insert option and we'll click on the force we'll click on the force can you see that guys force option guys Yes, can you see that? Yes, sir. Okay so click on the force now when you click on the force can you see the some more options are open at the bottom you can see the some more Yes, options sir. Yes, sir. Yes, sir. here No, sir. what is the first option they're asking for apply means where you want to apply force so where we should apply the force generally at the top
Because when your satellite is in a space, the force will be acting downward action, right? So we'll apply at the where? At the top surface. Down action. And there is a one more option, guys. You have to keep in mind one here. After selecting the surface, you have to apply magnitude. Can you see that I have circle magnitude? How much force Yes, is written here? 0 Newton. How much it is written? 0 Newton. And capital N मतलब Newton force. तो यहाँ पे हमें कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू, तो हमको उसको लिखना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे हम कितना अप्लाई करते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हम अप्लाई करेंगे 200 न्यूटन. कितना अप्लाई करेंगे बच्चों? 200. ठीक है. आप वैल्यू चेंज कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है. तो चलिए हम क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड है, वहां पे हम क्या लिख देते हैं? 200 लिख देते हैं. कितना लिख देते हैं बच्चों? 200. आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? I have changed the value from 0 to 200. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. Now you have to go to the geometry selection option. The top only it is. Where it is? It is at the top only. Can you see that? It is saying no selection. Yes, sir. It is saying Yes, sir. what it is saying? No selection. So what do you have to do? Where you are going to apply 200 Newton? So you have to go click on geometry selection and then select the surface. So where we have to apply? We have to apply at the top. Can you see that it has become green color? Yes. Now Yes, sir. I have selected the surface. Now what I have to do? After selecting the surface, what I have to do? I have to click on apply. Very good. Apply button. Now I am going to apply. Check it. What is happening? Just check it. I am going to apply. What happened? What happened, guys? Red color. Sir, this is red. Now one more important thing, guys. One more thing. You can see the direction. Can you see the direction? Yes, sir. So Yes, sir. here the meaning of this is 200 Newton force is acting. 200 Newton force is acting. Where? Acting at the top surface. At the top surface. In which direction, guys? In upward. Upward. Is the direction is correct, guys, or wrong? Sir. Yes, sir. Force will act which direction? Which direction force will act, guys? Upward. Sir, upward direction. Sir, downward. No, see, when you go upward, like in a space or something, or upward direction, the force because of gravity, the force will act where? Where it will act? Downward or upward? Downward upward. direction. ऊपर क्यों लगेगा? जब आप ऊपर जाते हैं तो फोर्स किधर लगता है? आप मान लीजिए कोई you have thrown a one ball in the upward direction. What will happen after some time? Ball will come back, right? Isn't it? Yes, sir. Why it is coming back? Because of the earth, because of the gravity, some force is acting in downward direction. That is called weight. What is that? Weight. Wait. यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन जो हमने लगाया है वो गलत लगाया है, को चेंज करना पड़ेगा. किधर करना पड़ेगा? नीचे की ओर. तो दो ऑप्शन है, या तो 200 की जगह हम क्या लिख दें? We have two options. Either we write 200 as minus 200, or maybe we can change the direction. That is what we can do. So now what we'll do? We'll write minus 200. What we'll do? Minus 200. Minus 200. Can you see that now direction has changed? Can you see that, guys? Yes, sir. Yes, sir. That is downward. Change into upward to downward direction. Yes. Now I have given the condition. I have just as per our analysis, static and structural, we have fixed our structure and we have applied the top side 200 Newton forces. This value you can change by your own and you can play it. Now last option. Now look at the tree diagram. Can you see the tree diagram, bacho? What is happening Yes, there? Now sir. step is, what is happening? Static structure, yellow color is coming. Booster option means you have to solve it, and then solution also you have to solve it, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So now what we have to do? We have to go for solution. Now the thing is we have to get the solution. Now you have to go to the solution, right click on the solution, insert. Now guys, tell me, when you apply some force on the body,
what will happen to the body? Like suppose you take आटे का जो आप बनाते हो, पानी मिला के आटे का बनाते हो ना, क्या बोलते हो उसे, आटे को गूंथते हो फिर बनाते हो उससे, तो उसमें आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है उसमें, आटे का जो बनाते हो, you make the chapati na, before that you put water in the atta, and then you will make that what round, right? So if you apply the force, what will happen to that shape? What will happen to the shape, guys? सर अगर आप उसमें कोई बल लगाते तो उसके शेप में क्या होगा, बोलिए। सर उसके शेप में परिवर्तन आ जाएगा और वो कहीं से भी हो सकती है। Same will happen here also. If you apply force, the structure is going to deform. Structure is going to deform. Change मतलब deform. तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे गया, पूजा, you are disturbing the class. What you are doing on the screen? Okay, insert, deformation, deform होगा फोर्स अप्लाई पे, डिफॉर्मेशन आपको टोटल पे क्लिक करना है। नाउ अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया, आपका येलो साइन आ रहा है, टोटल डिफॉर्मेशन आ चुका है, सभी देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी दैट इन द ट्री डायग्राम inside the solution? You have something is called what, total deformation. So what result we are getting? We are going to get the result of the deformation when we apply some force and it is fixed at one end, one face, how it is going to change. Now we are going to see. Now all are yellow color, right? Now Yes, I have sir. given the conditions. I have just apply. I have asked for solution. What kind of solution we want? That one. Now the final option. What we have to do? We have to right click. You click on the right click on the solution and you can see the one option is called solve. Can you see that, guys? Yes, Solve sir. option. Going to click on this. Just see that the moment I click on the solve, what is happening in the structure? I click on the solve. See that what happened. What is happening? It will take some time. You can see the sign are changing in front of, in the tree diagram, in front of solution, how the symbols are. It was yellow, now it is green. It is taking some time. See, you can see the left corner, it is progressing. Can you see that left corner, guys? Yes, Here. sir. Yes, sir. It's ready. Now you can see that it's ready. सर Can you see that, guys? Yes. सर मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। Yes, you can leave the meeting. Who want to leave, they can leave. Okay, fine. So here you can see in the bottom corner left, you can see the ready means now it is done. So now your solution has come. Your solution has, guys, come. So where is the solution? How to check? So you have to go to the tree diagram. Can you see the total deformation option, guys? Last Yes, option. sir. Now see, it has converted into tick or not? Yes or no? It Yes, has sir. converted into. Yes, So sir. now what you do? Just click on the deformation. Can you see that? Changes? Yes, sir. Yes, sir. What you Yes, can see? Yes, sir. It has come as the same like how. Change in colorful colors. Can you see the color is same like how I have shown at the beginning? Flight, car, truck, same like that. कलरफुल हो गया ये रंग Yes, sir. बिरंगा। जैसे वहाँ पे पहले था ना कलर वैसे ही हो गया। Now here different colors represent different thing. What do you mean by red color? You can see the red color, orange, and somewhere yellow, green, blue. Triangles for danger and blue for safe. If I can play the animation, I have animation also, but just a second. Guys, just a minute. Options are not there. Otherwise, I can show you the image. Okay. So here the meaning of different colors. So here red color means that reason is in what? Danger. Red color means Danger. now see that when you safe. guys just look at the structure. What happened? I'm just moving it. You just see that what happened to structure. You have applied 200 Newton force, right? See how it has bended. Just look at it. I'm just rotating. Can you see that? It has bent or not? See that? Yes, sir. Yes, sir. From the top, it has bended more. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
I'm not able to see that if I can show you the animation part. Oh, where is it? All the options have gone. Just give me a minute, guys. I can share play the animation also, but तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ. ये देखिए आपका ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे. ओके. तो ये देखिए रिजल्ट आया है यहाँ पे. आपको देख पा रहे होंगे नीचे. ये आप रिजल्ट यहाँ से ले सकते हो. ठीक है सर ये आपका रिजल्ट है. यहाँ से आप रिजल्ट दे सकते हो. तो रेड कलर वाले रीजन में क्या आपका ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा? क्या होगा बच्चों? रेड कलर वाले रीजन में आपका स्ट्रक्चर More ज्यादा डिफॉर्म होगा. तो यहाँ पे देखिए साइड में यहाँ पे दिया भी हुआ है. आपको ये दिख रहा है? यहाँ पे देखिए वैल्यूज भी दी हुई हैं. आपको दिखाता हूँ मैं. यस सर ये देखिए साइड में देखिए लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको बच्चों? यस सर यहाँ पे वैल्यूज दी हैं. सबसे ऊपर कौन सा है? कौन सा कलर है बच्चों? रेड देखिए इसमें लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? 2.3138 E-7 मैक्स. ऐसा कुछ लिखा हुआ है. राइट. You know what do you mean by E-7? E-7 का मतलब है 10 to the power -7. तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है बच्चों? 2.3138 into 10 to the power -7. ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है. और मिनिमम कितना है बच्चों? मिनिमम कितना है? 2.5709 E-8. हाँ. और ब्लू वाला रीजन तो 0 है. देख पा रहे हो आप? यस ब्लू वाला सर डार्क ब्लू. यस सर तो देखिए हमने यहाँ 200 न्यूटन का फोर्स लगाया था. तो अब हमें पता चल गया कौन से रीजन में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है. पता चल गया? नहीं पता चल गया बच्चों? राइट. यस सर तो जहाँ पे रेड है वहां पे कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है? कितना चेंज हो रहा है? 2.3138 into 10 to the power -7. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू डिफॉर्मेशन. ओके. एंड ग्रीन वाले में कितना हो रहा है बच्चों? 1.0284 E-7 Okay. 1.0284 And it is E-7 meter. It is meter. Deformation is meter. कैसे पता चला मीटर बच्चों? कैसे पता चला मीटर? ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे ये आपका आ रहा है. ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है. ऊपर रिजल्ट में लिखा हुआ है. यहाँ पे क्या लिखा है? स्टैटिक सर स्ट्रक्चर. यूनिट इसकी मीटर है. यहाँ देखिए लिखा हुआ है टाइमिंग. कब आपने ये एनालिसिस किया है वो टाइमिंग लिखा हुआ है. ठीक है. यूनिट क्या लिखा हुआ है? स्मॉल एम. यूनिट मीटर. तो ये आपका जो भी डेटा है ये सब पूरा मीटर. समझ में आ रहा है बच्चों? टू मीटर. यस सर I hope that you understood, right? यस सर यस सर यस सर यहाँ पे फाइल का ऑप्शन एक्चुअली जस्ट अ मिनट गाइस. देयर इज अ एनिमेशन आई कैन शो. तो यहाँ तक सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर So what is this called? यस सर This is called static structural deformation. हमने देखा यहाँ पे. देख पा रहे हैं आप? मैं रोटेट कर रहा हूँ. देखिए नीचे वाला पोर्शन ब्लू है और आपका देखिए कैसे Yes, स्ट्रक्चर sir. बेंट हुआ है. सभी देख पा रहे हो? यस सर Okay. So that is what for today, guys, and that is what all about today's session. So what you have to do, guys, today, you take the screenshot and share with your friends and explain this. What is this? Okay? Will you able to? Yes, or your sir. teacher? You can take the photo and you can explain. Will you able to explain, guys? यस सर Okay. मैं आपको अभी एनिमेशन दिखा रहा हूँ. एनिमेशन दिख रहा है आपको? यस सर. यस सर Okay, दिख रहा है? एनिमेशन दिख रहा है आपको अभी? यस सर देखिए कैसे कलर चेंज हो रहा है. जैसे फोर्स लगता है तो देखिए कैसे चेंज हो रहा है. दिख रहा है आपको? यस Can you see that? यस सर यस सर जब 0 फोर्स लग रहा था तो पूरा ब्लू था. जब 200 न्यूटन का लगाया देखिए कलर कैसे, आपकी बॉडी कैसे चेंज हो रही, बेंट हो रही है. देख पा रहे हैं आप? अभी आप देख पा रहे होंगे आपका स्ट्रक्चर बेंट हो रहा है. ये देखिए कैसे बेंट हो रहा है. दिख रहा है आपको? यस सर आपका देखिए स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे सुकुड़ भी रहा है. राइट? यस और नो? यस सर Perfect. So
So that is what for today, guys. That is what from my side. Yes. So yes, that is what from my side. That is for today's class. And with this, we have done with the satellite part. The next will be moving for the drone and rockets. So Okay, from sir. the next class, we'll be talking about drones, and then we'll be going to the rocket part, right? Yes. Yes, sir. So Yes, that is sir. what for today. If anybody have any doubt, you can ask. No, sir. No, sir. No, sir. No doubt. No, sir. No, sir. So let's go for the conclusion. So tell me, you have to raise your hand and tell me what you have learned today. Yes. I have doubt. Yes, Amrit. तो जब हमारे पास एनालिसिस करने के लिए सॉफ्टवेयर है तो भी सर एक ऑर्गेनाइजेशन है एनकैप, वो सर कार्स को रियल में कोलाइड करवा के टेस्ट करती है, ऐसा क्यों? आप फिर से रिपीट करेंगे बच्चों? जो लोग अदर्स लोग जो बात नहीं कर रहे हैं वो अपना माइक को ऑफ रखें प्लीज. इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट. यस, बोलिए अमृत. फिर से कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हमारे पास ये सब एनालिसिस करने के लिए मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन सर फिर भी जो कार्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें सर एक ऑर्गेनाइजेशन है एनकेप जो कि सर कार को रियल में कोलाइड करके टेस्ट करती है, ऐसा क्यों? But see that not only one, many of the automobile industry do that. Okay, so the thing is there are some analysis which we cannot do from the software. Are you getting? Because these softwares are came like 5 years or 4 years back, so all the things has not been updated. So see, as the technology is growing, new things are coming, right? So they are doing that maybe to add something new into the software. So for that they are just doing the real. But the thing is, might they will be recycling the same car, because we cannot purchase new car and do again different kinds of experiments, right? Isn't it? So to add the new things, because it needs to be updated, so for that purpose, right? But generally most of the time what will happen, they will do on the software only. Otherwise they have loss, right? For every car they will do the collision. How many cars they have to purchase and do it? So it's a waste of money, no? Is it clear, Amrit? Yes sir. Okay, any other doubt, guys? Let's go for the minutes of note. So who is coming forward? No, sir. That's what you have learned today. Who's coming forward? कौन आ रहा है आगे बताने के लिए कि आज आपने क्या सीखा? Yes, Pooja. Nobody is coming. Miss कुछ नहीं सीखा. Nothing you have learned. Only 2%. Amrish is only answering. No, I will call the name. No, I'm going to call the सर name. आज हमने एनसिस सीखा. एनसीसी सीखा. एनसीसी. एनसीसी तो स्कूल में हमारा होता है. एनसीसी क्या सीखा हमने? पीहू? एनसिस क्या बोलते हैं बच्चों? एनसिस. अमृत बोलिए, आप ही बोलिए. सर एनसिस. ANSYS. बोलिए अमृत आप ही बोलिए, कोई नहीं बोलेगा. सर आज हमने हाँ, सबसे बोलिए. पहले एनालिसिस के बारे में सीखा और उसमें हमने सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करा फॉर्मूला वन कार और बाइक, ट्रक एंड एयरप्लेन, इनमें एनालिसिस करके आपने बताया कि इनमें कौन कौन से पार्ट्स डेंजरस है, और आपने सैटेलाइट को एनालिसिस करके बताया, और आपने जो एयरप्लेन के इंजन है, एयरप्लेन के इंजन को भी एनालिसिस करा आपने, और जो इंजन होता है, इंजन मेनली इंजन के बारे में भी आपने बताया, और इंजन को भी एनालिसिस करके आपने बताया. इंजन जो होते हैं इसमें मेनली 2 टाइप्स के इंजन होते हैं. सबसे पहले होता है 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा होता है 4 स्ट्रोक इंजन, और जो इसमें रोटेट ऊपर मूव करते रहते हैं उन्हें कहा जाता है पिस्टन. और आपने 3 मतलब कि प्रोपेलर के बारे में भी बताया था, प्रोपेलर के बारे में, और जो एयरप्लेन के साइड का जो कॉर्नर होता है उसके बारे में आपने बताया था, जैसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एयरफॉइल. इसका काम ये होता है कि जो प्लेन के जो प्रोपेलर होते हैं जब वो मूव करते हैं तो वो एयर को डाइवर्स करके पीछे की तरफ जब मूव करते हैं तो ये एयरफॉइल उस एयर को नीचे ग्राउंड में टच करता है, जिससे कि एयरप्लेन जो ऊपर
हवा ऊपर उड़ने के लिए, फ्लाई होने के लिए लिफ्ट करता है, और आपने एनसिस सॉफ्टवेयर को यूज करके भी बताया, मतलब हमें एक्सप्लेन करा। थैंक यू। Anyone else want to add anything? हाँ, Now I'll call to Anuva. Anuva, yes, what you have learned? Sir, we learn how to do analyzing for that, sir. Analyzing for what? Ourselves. No, sir. Then analysis for what? Analysis of Analysis of what? Human body. No, sir. analysis then. of satellites. Satellite. Okay, fine. That's it. That we have learned. Navneet, Sir, we learned about that ANSYS software and how to do that analysis, that static structural analysis on structures. no, fine. Can anybody say what are the analysis we can do in that, like some of the names in the ANSYS software? I shown you many of the analysis. Yes. Sir, random vibration, Okay. Any other? fluid flow, Fluid flow. Very good. Temperature one can we do? Thermal, right? Thermal analysis. टेम्परेचर एनालिसिस को हम थर्मल एनालिसिस बोलते हैं. फ्लूइड फ्लो सीएफएक्स होता है, फ्लूएंट होता है, वाइब्रेशन हो गया, ऑसिलेशंस के लिए होता है, इलेक्ट्रिक के लिए होता है, like that. Okay, so okay guys, then see you tomorrow with the new satellite part we have done with. So tomorrow we'll be starting with the which part? We'll be most probably starting drones tomorrow. Okay, then we'll be going for the rocket part. So most probably by Saturday our workshop will get over. Okay, so we have 3 more days, so we'll see how we can do. Okay, fine. So thank you so much guys for Thank you, sir. joining. See you tomorrow. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, Thank you, sir. sir. Have Bye, a sir. nice day.